Magnetic lines of force. A magnetic field like electric field can be represented by lines called magnetic lines of force. When a compass needle is placed in magnetic field of a bar magnet or any type of magnetic field, the needle raised in a definite direction. As the needle is moved in the field, its direction goes on changing continuously. The path of the compass needle is a curved line which originates from north pole of the magnet and terminates at the south pole of the magnet. This is lines of force. Thus, the lines of force in a magnetic field are those imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field at a given point. The tangent drawn at any point to the lines of forces shows the direction of magnetic field at that point. So ये जो continuous curve है यहाँ पर, wait. So magnetic lines of force क्या है? The lines of force of a magnetic field are those imaginary lines. These are imaginary lines which represent the direction of magnetic field. The tangent drawn at any point, tangent, a line which is touching a given curve at only one. So a tangent drawn at any point on a line of force shows the direction of magnetic field at that point. ये जो tangent है नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? ये डायरेक्शन रहेगा. Why? Because tangent जो है tangent to this curve is at this point is lying in this particular direction. Is that okay? Figure 7a, 7b shows the magnetic lines of force of the field due to a current carrying wire or field due to a current carrying solenoid and a bar magnet respectively. ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए है और ये बार मैग्नेट के लिए है. ठीक है. The similarity of lines again shows that solenoid and a bar magnet are identical in magnetic behavior. The behavior of magnetic field and lines of forces because of a solenoid and a bar magnet is almost of similar nature. And this thing we have proved mathematically as well with the help of expression for magnetic field at a point, any given point. ठीक है. दोनों के लिए expressions जो होते हैं they are almost of similar nature. Properties of magnetic field, key properties. The magnetic lines of force emerge from north pole, ठीक है, and enters the south pole. So it starts from north pole and it ends at south pole. Reach back the north pole. कुछ बोलना चाहते हैं? So magnetic lines of forces are going to start from north pole and enter at south pole. ठीक है? And it is going to be a closed path. Therefore, it is going to be a closed path. Thus, these are closed loops through the magnet. ठीक है? So it originates from north pole, enters into south pole, and then inside the magnet is goes from south to north. Is that okay? So it starts from north pole, enters south pole, and inside the magnet it goes from north to south. So it becomes a closed loop. Is that okay? Compared to electric lines of forces, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होता था, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता था और दोनों चार्ज एक साथ नहीं रहते थे, इसलिए दैट नेवर यूज्ड टू बी अ क्लोज्ड लूप. बट ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? दैट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड लूप. इज दैट ओके?
The two lines of forces never intersect each other. The two lines of force never intersect each other. That's another key property. The two lines of force never intersect each other. They never cross each other. If they are going to cross each other, तो जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पे the direction of magnetic field will become ambiguous. ठीक है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर क्रॉस कर रहे हैं तो, जैसे ये दो लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ये एक लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और दूसरा ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर एक टैंजेंट ऐसे हो जाएगा और एक टैंजेंट ऐसे हो जाएगा, दो अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक निडल का हो जाएगा। अब ये किसी भी एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही मैग्नेटिक निडल पॉइंट नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। इट हैज टू पॉइंट इन ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originating from same source can never intersect. Is that okay? दो अलग अलग सोर्सेस के मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगे, दे कैन इंटरसेक्ट, बट सेम सोर्स के नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। Is that okay? Third thing is, near the magnetic poles where field is stronger, the lines of forces are closer. और जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, वहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी फार्दर और दे आर गोइंग टू बी प्लेस्ड विथ अ good amount of separation. Is that okay? Going away from poles, the field becomes weaker and the lines becomes rarer. Rarer means they are placed far apart. Thus, larger the number of lines of force at a given point, stronger is the magnetic field at that point. So if we have a point jahan par we have more number of lines, जैसे इस point पर there are more number of lines per unit area, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर stronger field हो जाएगा। वही अगर far spaced lines हैं तो फिर क्या हो गया, इस point पे या इस point पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वीकर। ए सिनेरियो में इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बी सिनेरियो में इट इज गोइंग टू बी वीकर। इज दैट ओके? In a uniform magnetic field, as Earth's magnetic field at a place, the lines of forces are parallel and equidistant. Earth's magnetic field at a place, the lines of force are parallel and equidistant. Fifth, no lines of force will pass through neutral point. No lines of force will pass through a neutral point. Neutral point का मतलब a point where no field exists. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर नहीं रहेगा that will be a neutral point. Magnetic field is equal to 0 implied neutral point. तो वहां पर lines of forces क्या रहेंगे, they are also going to be nil. Magnetic lines of force may enter or come out from a magnetic pole at any angle. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या था, दे ऑलवेज ओरिजिनेट एट राइट एंगल और नॉर्मल फ्रॉम द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, यहां पर क्या है, दे कैन ओरिजिनेट और एंटर एट एनी एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक। ठीक है, मतलब वही हुआ ना, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइंस जो थे वैसे ही है। नहीं, इलेक्ट्रिकल लाइंस जो थे वो क्या होते थे, 90 डिग्री पर निकलते थे ऑलवेज। हाँ हाँ हाँ, वो टेंजेंट ठीक है, होते थे। हाँ, हाँ बट यहां पर क्या है, दे कैन ओरिजिनेट एट, जैसे यहां पर दे कैन ओरिजिनेट एट एनी एंगल। ओके, मतलब जैसे कहीं से भी निकल हाँ, सकते हैं। किसी भी एंगल पर निकल सकते हैं और किसी भी एंगल पर वो एंटर कर सकते हैं। यही पॉइंट को छोड़ के बाकी सब चीज जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस। ऑलमोस्ट सेम, दो चीजें, एक तो ये क्लोज लूप होते हैं और दूसरा किसी भी एंगल पर निकल सकते हैं, बाकी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके ठीक है। ठीक है,
ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। पहला एट एनी एंगल मैग्नेटिक लाइन, ये वाला एक पॉइंट, और हाँ। दूसरा क्लोज्ड लूप। ठीक है, magnetic field lines form closed loop whereas electric field lines are open ended. So that is the only that is the only, these two are the only differences. Between opposite poles, north and south, lines of force may have tendency to attract like a stretched string to contract. So north and south के बीच में it will have a property like stretched string which is trying to contract itself. And between similar poles, north and north or south, they have tendency to repel. तो साउथ साउथ भी है तब भी वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ भी है तब भी वो रिपेल करेंगे. दैट मीन्स दे विल हैव टेंडेंसी ऑफ बिहेविंग एज अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. स्ट्रेचिंग जैसे स्ट्रिंग का करते हैं हम फोर्स एक्सटर्नल लगा करके, यहाँ पर ये उसी तरह का बिहेवियर शो करेंगे. इज दैट ओके? तो ये पॉइंटर्स हैं, इनको एक्चुअली आपको याद करना होगा लिख करके या जैसे भी. यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपके बोर्ड वाले एग्जाम में भी आते रहते हैं. इसलिए डिफरेंस वाला जो पॉइंट है ना, वो प्रिसाइजली हमको ध्यान में रहना. ठीक है सर. ठीक है. Lines of forces are not closed loop and they originate from conductor at right angle or normal. ठीक है. ये बेसिक चीज के बाद देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. Earth behave as if a powerful magnet is placed within it, the south pole of the magnet being towards the earth north pole and north pole towards the earth south pole. तो हमारा अर्थ जो है which is like this, इसका ये नॉर्थ पोल है, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक साउथ. ठीक है. ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ के अंदर जो मैग्नेट पड़ा हुआ है, अर्थ मैग्नेट, वो इधर साउथ पोल होता है और इधर नॉर्थ पोल होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ. बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेट जो है, अर्थ के अंदर अगर हम ये अज्यूम करें कि एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, बड़ा सा बार मैग्नेट, तो जिधर हमारा नॉर्थ पोल है दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, उधर हमारे मैग्नेट का साउथ पोल होगा. और जिधर मैग्नेट का साउथ पोल, जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उधर हमारे अर्थ का साउथ पोल होगा. इज दैट ओके? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लो. इफ यू वांट एक काम करता हूँ, मैं लिखते भी जाऊंगा इस चीज को सो दैट हमारा नोट्स बन जाएगा. सो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, बट आई एम राइटिंग दिस पार्ट. टुडे इज 23. So suppose this is our earth and this is our geographic north pole. GNP is geographic north pole
this is ASP, geographic now. If we suppose that there is a magnet base of at the core of the earth, and this side will be south pole and this side will be north pole. This is referred as magnetic north south pole, MSP. Okay. Magnetic south pole, and this will be magnetic north pole. There I should uh, do some cosmetic changes. So use green to represent it. ये वाला part S और ये वाला part N. This is M S P and this will be M N P. इसका मतलब है मैग्नेटिक साउथ पोल. This will be magnetic north pole. ठीक है. सॉरी, ये दिख रहा है डायग्राम. Magnetic field can be considered to be originated due to a strong bar magnet placed at its core. The alignment of this bar magnet is represented as follows. Is that okay? Just note it down.
Noted. Noted. Yes, sir. Okay. हाँ, अरे देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ये जो पॉइंट लाइन है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ ड्रॉन रहेगा। इस चीज को हम ज्योमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ इज कॉल्ड ये ज्योमेट्रिक एक्सिस। ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पुश कर लेते हैं, एन को थोड़ा सा राइट लेते हैं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके दो ड्राइंग्स बना दूं। ये वाला क्या होगा मेरा, दिस इज गोइंग टू बी दिस लाइन ज्वाइनिंग ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक साउथ is called geometric axis, एंड ज्योमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ज्वाइन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक इक्वेटर। ठीक है। ये जो इक्वेटर अभी हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक इक्वेटर। इज दैट ओके? ज्योमेट्रिक इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक एक्सिस। ये है ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्योमेट्रिक एक्सिस। दूसरी चीज इसके अंदर में होती है, अगर नॉर्थ और साउथ पोल को हम ज्वाइन करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, पहली चीज तो ये कि ये इट विल बी लाइंग एट सम एंगल टू द
ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक साउथ, ठीक है, ये कुछ एंगल रहेगा, स्मॉल एंगल, और this point is going to be, this line is going to be called as magnetic axis. Magnetic axis. Is that okay? और इसके perpendicular जो line passing through the center of Earth, this will be referred as magnetic equator. ये वाला line है magnetic equator. Magnetic equator. ये बात समझ में आ रही है क्लियरली? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नोमेनक्लेचर्स में? ठीक है। ये पॉइंट कि मैग्नेटिक अर्थ के अंदर मैग्नेट है, इट इज, I mean the magnetic properties is primarily because of a strong bar magnet. It is described based on three facts. तीन इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स in support of this statement, ठीक है। पहला जो होता है that is a magnetic needle at any point on earth always points its north pole towards geographic north pole, ठीक है, and south pole toward geographic south pole. Secondly, if a soft iron or if an iron bar, if an iron bar is placed
at is placed or is buried side or it turns magnetic, ठीक है, और it gets magnetized after some third one at surface of Earth if we place another bar magnet, ठीक है, there will be there will be a neutral point. A neutral point is created around this bar magnet. A pair of neutral points, a pair of neutral points are created around this बार मैग्नेट, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट के अराउंड अ पेयर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट तभी हो सकता है अगर एक ही सिंगल बार मैग्नेट मान लो आपने रखा है, नॉर्थ ये है इसका और साउथ ये है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली हर डायरेक्शन में निकल के जाता रहेगा। हाँ Why are you going to have a neutral point until and unless you have some other intervening magnetic field, ठीक है। और इसकी इस मैग्नेट की विसिनिटी में और कोई मैग्नेट आपने रखा नहीं है, तो अगर और कोई मैग्नेट नहीं रखा आपने तो देयर कैन नॉट बी एनी न्यूट्रल। बट अगर इसके अराउंड दो जगह, ठीक है, किसी भी ओरिएंटेशन में रखेंगे तो दो जगह पर इसकी विसिनिटी में वी ऑलवेज फाइंड न्यूट्रल पॉइंट्स। दो न्यूट्रल पॉइंट्स रहते हैं हर मैग्नेट के, बार मैग्नेट के नियर बाय रीजन, और वो तभी पॉसिबल है जब इसके अलावा, इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा देयर इज सम यूनिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एग्जिस्टिंग। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड दिस मैग्नेट। This confirms presence of this confirms the presence of Earth's magnetic field. Is that okay? अब ये जो पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ
magnetic axis, magnetic equator. So we need to understand them. बेसिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल जो है, ये दो ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है दैट बिकम्स वर्टिकल और परपेंडिकुलर, ठीक है, वो अपराइट खड़ा हो जाता है। जनरली बाकी किसी भी जगह पर रहेंगे हम लोग तो वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, ठीक है, मोस्टली हॉरिजॉन्टल रहता है। बट जब यहाँ पर आएंगे नॉर्थ पोल के पास में आ जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल जो होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, और साउथ पोल ऊपर की तरफ पॉइंट करने। इज दैट ओके? एंड सेम Yes, sir. चीज जब वो साउथ पोल पर हम उसको लेकर के आएंगे, साउथ पोल की तरफ पॉइंट करने लगेगा और नॉर्थ पोल क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। टेक दिस डाउन अगेन। ज्योमेट्रिक पोल्स, ज्योमेट्रिक या ज्योग्राफिक बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिक पोल is are the places places on Earth surface where magnetic needle becomes perpendicular perpendicular to the surface. That is, it points it points up and down. The place where north pole of magnetic dipole dipole points downwards is referred as geographic north pole, whereas the point where or the place whereas the place where south pole of magnetic needle, एक्चुअली यहाँ पे भी डाइपोल नहीं निडल होना चाहिए, डाइपोल भी ठीक है बट इट्स मोर ऑफ निडल, where south pole of the magnetic needle points
downward is referred as geographic south pole. Line joining geographic south and geographic north pole is referred as geographic axis. ये नोट कर लिया था तुमने? ये नोट कर लिया? हाँ सर, हाँ सर, नोट कर लिया. Okay. The line joining the line joining geographic north pole and geographic south pole is referred as geographic axis, geographic axis or prime meridian. ठीक है? The line slash circle perpendicular to this geographic axis is referred as equator. Is that okay? Yes, sir. Geomagnetic geographic. It's not geographic north, it's geomagnetic pole or magnetic north pole. Geomagnetic बोलते हैं इसको, geomagnetic north pole, and this is geomagnetic south. And then we have line joining geomagnetic north and geomagnetic south is called geomagnetic axis. ये प्राइम मेरिडियन नहीं होता, प्राइम मेरिडियन geomagnetic है, geomagnetic north pole, geomagnetic south pole, geomagnetic axis. The line circle perpendicular to this geomagnetic axis is called geomagnetic equator. Geomagnetic axis
is known as geomagnetic इक्वेटर। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है at geomagnetic equator or at any point on geomagnetic equator, at any point on geomagnetic equator, the magnetic needle is always horizontal. Is that okay? तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. X। इस चीज को अगर मैं कॉपी करके दूसरी तरफ लिख करके आता हूँ, फिर तो सपोज मैं मैग्नेटिक निडल लेकर के घूमता हूँ, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक निडल कैसे पॉइंट करेगा? इट इज गोइंग टू पॉइंट लाइक दिस with its south pole over here and north pole over here. Is that okay? अच्छा, Yes, नॉट sir. एग्जैक्टली ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे नहीं रहेगा। ये कैसे अलाइन करने लगेगा? ये कुछ ऐसे होने लगेगा। इट विल स्टार्ट डीपिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस ये बिहेव करने लगेगा, जहां पर साउथ पोल ऐसे रहेगा, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आएंगे तो इट विल बिकम परफेक्टली परपेंडिकुलर। तो जब हम यहाँ पर रहेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट अलाइनिंग और गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर स्लैंटेड। इज दैट ओके? यहाँ पर और स्लैंट हो जाएगा ऐसे, और जब हम यहाँ पर रहेंगे तो इट विल बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ Yes, रही है? sir. अच्छा, साउथ को मैं एरो देता हूँ और नॉर्थ को एरो नहीं देता। ठीक है, तो इससे क्लैरिटी रहेगी हम लोगों को। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर रहेंगे तो कैसा रहेगा? Yes, sir. इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। Hmm. अब साउथ पोल जो होगा वो धीरे धीरे उठने लगेगा, और नॉर्थ पोल जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। Okay. इज दैट ओके? Hmm. अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस ओवर हियर, और यहाँ पर क्या करके क्या होगा? ये ऐसे होगा, साउथ पोल वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड। इज दैट ओके? Okay, sir. ये बात समझ में आ गई ना? ओके, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है, सी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट जो, उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज थ्री एलिमेंट्स, और वी डिस्क्राइब इट वाया थ्री एलिमेंट्स। पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तीन चीजों की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? द प्राइमरी रीजन इज कि अर्थ इज अ थ्री डायमेंशनल एंटिटी एंड एवरीथिंग अराउंड इट इज अ थ्री डायमेंशनल थिंग। तो थ्री डायमेंशनल
एंटिटी का मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो, आई मीन वैसे तो 2 डायमेंशनल का भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 3 डायमेंशनल ही होगा, तीनों हर डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल हम्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमको 3 पैरामीटर कम से कम चाहिए होगा। ये 3 पैरामीटर जो है, एक तो हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो नेट फील्ड या तो हम बताएं मैग्नेट का उस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हम लेते हैं। हम्म ठीक है, इस पॉइंट पर या तो हम नेट फील्ड बताएं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये हॉराइजन है, यहाँ पर इसके पैरेलल जो कंपोनेंट है दैट इज दिस मच, सपोज एक्स, और साथ में हमको दो चीजें और पता रहनी चाहिए, किस एंगल पर ये इंक्लाइंड है। अब क्या इंक्लाइंड है, तो पहली चीज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक नॉर्मल है। ठीक है, सपोज ये मेरा अर्थ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं लाइक दिस, सॉरी साउथ है ना, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक साउथ तो यहाँ पर है, मैग्नेटिक नॉर्थ तो हमारा इधर है, राइट। So it is going to originate from south and going towards geographic north। यहां से फिर से ये ऐसे जाता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी चीज ये है यस कि सर। अ, जैसे इस पॉइंट पर हम देखते हैं या इस पॉइंट पर देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एक्चुअल फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, या इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। और हम या तो इस फील्ड के डायरेक्शन को प्रिसाइजली हमको पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, हर जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है। अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल, ये टेंजेंशियल वाला जो है, दिस इज हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, राइट। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली निकाल करके और डिपिक्ट करते हैं, और साथ में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, देखो ऐसे समझते हैं इसको, ये वाला एक्चुअल लाइन ऑफ फोर्स है यहाँ पर, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में देयर इज गोइंग टू बी, मतलब ये बेसिकली एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। और ये एंगल प्लेनर एंगल नहीं होगा, ये कैसा एंगल होगा, सॉलिड एंगल टाइप होगा, 2 डायमेंशनल एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। तो 3 डायमेंशनल एंगल को, अब उस पर साइन थीटा कॉस थीटा तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो हम उसको दो प्लेन एंगल्स में डिस्क्राइब करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सर। ठीक है, तो हम उस सॉलिड एंगल को दो प्लेन एंगल्स में डिस्क्राइब करते हैं, और उन्हीं एंगल्स में से एक को हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और दूसरे को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अब ये दोनों चीजें डिफाइन कैसे होती हैं, दैट इज समथिंग, सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ वी नीड 3 एंटिटीज। ठीक है, एक मिनट मुझे देना ना, आई बी बैक फ्रॉम वॉशरूम। In order to describe Earth magnetic field,
any point on Earth, we need. हेलो, हाँ मैं, ठीक है। हम्म हम्म। मैं एक्सेल शीट तुमको भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं अपना बनाया हुआ एक्सेल शीट जो है ना, थोड़ी देर में आपको भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, वो फ्री होता हूँ तो आप भेज दो, भेज के रखो, फ्री होऊंगा तो कॉल। उसमें at any point on earth we need three, in order to describe Earth's magnetic field at any point on earth we need three parameters, namely first, horizontal component हाँ बोलेगा, पता नहीं, बिजी नहीं था, अभी तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बोलो ना। हाँ अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ रही है, ठीक है। और त्वरा, अच्छा वेरी गुड, ठीक है चलेगा। तो फिर देख लो, आज आना है तो आ सकती हो, नहीं आना है तो यू गाइस कैन लीव। ठीक है कोई बात नहीं है, तो फिर रहने दो, चलेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, थर्ड एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और ये किस लिए हमको तीन कंपोनेंट चाहिए? टू डिस्क्राइब द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज लेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, लेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी
at point P near Earth surface. ठीक है. The horizontal ठीक है. component, the horizontal, अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर मैं मैग्नेट को रखता हूँ, मैग्नेटिक निडल को रखता हूँ, जैसे इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है, ठीक है ना. यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक निडल को रखूंगा, व्हाट विल हैपन? इट विल पॉइंट समथिंग लाइक दिस, जिसमें उसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे, और साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस. एंड ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ये है हमारा यहाँ पर, राइट. हेलो. हाँ, एक काम करो, भूमिका को छोड़ दो, तुम दोनों अगर आ रही हो तो आ जाओ, और स्वरा भी नहीं आ रही है तो तुमको आना है तो तुम आ जाओ. ठीक है. पढ़ने के लिए नहीं, सॉल्व डाउट खत्म करने के लिए. तुम लोगों के लिए टाइम क्रिएट होकर के नहीं आएगा अलग से. ठीक है, जिनको मिस करना है उनको मिस करने दो. चलो. हाँ. सो एंड द horizontal component of Earth magnetic field B बी एच. जनरली किसी भी जगह के मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बी एच बोलते हैं. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वी वी. वर्टिकल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी बी वी. ठीक है. अब सी, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा. यानी बेसिकली वी आर डूइंग अ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर. फील्ड इज अ वेक्टर. वेक्टर का प्रोजेक्शन कर रहे हैं दो डायरेक्शंस में, राइट. वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वन along the horizontal direction, another along the vertical direction. बात समझ में आ रही है? ये रेड वाला जो है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा. और यहाँ पर जो एंगल होता है बिटवीन दिस एंड द हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेप्थ. ठीक है. तो एक एक करके बताते जाता हूं मैं. सबसे पहला चीज है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन.
इसको मैं, अच्छा ठीक है, इसको रखता हूं मैं अलग से, और मैं एक और चीज को कॉपी करके ऊपर जो था ना उस डायग्राम को कॉपी करके लाता हूँ और थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करता हूँ। ठीक है, मेरिडियन एक चीज होती है, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन एंड अदर मेरिडियंस आपको पता होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो पता ही होगा ना। हेलो। हाँ हाँ आता है। तो मैग्नेटिक, सॉरी, I'll move on to the next, या फिर उधर यहीं पे ये वाले को यहीं पे समझा लेता हूँ, फिर I'll go to the next page। ठीक है, यहाँ पर समझाना बेसिकली मुझे ये है कि सपोज यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और ये लाइन वगैरह जो ज्वाइन किया हुआ है, ये ग्रीन वाला जो लाइन था दैट वाज मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड ये पूरा 360 डिग्री एक रोटेशन हम ले सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी 360 डिग्री रोटेशन ले सकते हैं, और इन पॉइंट्स को ऐसे अगर हम मिलाते हैं तो हमारा एक सॉर्ट ऑफ मैग, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियंस, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड ऑन सिमिलर लाइंस अगर मैं ज्योमेट्रिक मेरिडियंस को भी, ज्योमेट्रिक मेरिडियन अगर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, विच वी कैन डेफिनेटली डू, देयर इज नो इशू एज सच कि हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे 360 डिग्री एंगल बनेगा, और 360 डिग्री एंगल पे मैं ऐसे अगर चीजों को ज्वाइन करता हूँ तो, सॉरी, राइट, और ये सिर्फ इधर ही नहीं बनेगा, ये ऐसे घूम करके दूसरी तरफ भी जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस डिजाइन? यस सर समझा। समझ में आ रहा है ना? ओके। अभी ये बहुत ज्यादा घिचपिच करेंगे तो गड़बड़ होगा, इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, या एक ही लाइन पर हम कंसंट्रेट करते हैं, रहने देते हैं बाकी को भी, बट वी विल कंसंट्रेट ऑन जस्ट वन, ठीक है। सपोज आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन, एक तो ये वाला लाइन, ग्रीन वाला ये लाइन, और ब्लू वाला ये लाइन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेते हैं क्योंकि यहीं पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। देयर इज अ एंगल बिटवीन देम, इज दैट ओके? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में देयर इज सम एंगल, राइट। इस एंगल को वी कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। At any place, the acute angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination alpha. Is that okay? ओके सर। Okay. So इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन को जनरली हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं,
सॉरी, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ डिप जो होता है, अच्छा डी डबल ई पी नहीं होता है, इट्स डी आई पी, सॉरी, डी आई पी एंगल ऑफ डिप, इसको हम जनरली पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज क्या करना है? डिक्लाइनेशन, दो acute angle between magnetic the acute angle between magnetic meridian and geographic meridian at a point is called angle of declination of that point. यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज जो होती है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अल्फा एंड magnetic meridians are not defined at magnetic or geomagnetic pole. Geomagnetic हेलो फील्ड। अरे बेटा, एनर्जी और फोर्स में क्या फर्क होता है? क्या होता है बता।
हाँ, तो क्या फर्क होता है? वो, वो, हाँ, तो वही फर्क मैं भी कैसे बताऊं, वही एग्जैक्टली फर्क इसमें भी होता है। पोटेंशियल जो है वो एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, और फील्ड जो है वो फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। फोर्स जो होता है वो, अबे सुनो, फोर्स इज एजेंट विच, और विच बेसिकली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल को डिलीवर करने के लिए फील्ड इज द एजेंट। ठीक है। हम्म, कहाँ पे डिफाइन नहीं होता और कहाँ पे डिफाइन होता? क्या क्या? हाँ, कौन बोला? कहाँ नहीं डिफाइन होता है? पॉइंट चार्ज के ऊपर तो पोटेंशियल भी नहीं डिफाइंड होगा। ठीक है। और इज नॉट डिफाइंड एट जियोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। वी विल अगेन मीट टुमारो एट 4 p.m. ओके एंड सर। टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। कल के दिन में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। विल पॉसिबली भी 20 मिनट के आसपास और इसमें लगेगा। एंड हम्म। ओके सर। ठीक है। ओके बेटा। ठीक है सर।